जी जरूद्दीन साहब प्लीज। स्पीकर, आप गलत कर रहे हैं। बिल टू मेक प्रोविजन। आप गलत कर रहे हैं। देखो आपको मैंने दिया, आउट ऑफ द टर्न दिया, आपने नहीं किया। आप करें जी प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। आई राइज आउट ऑफ द टर्न आपको दिया है और मैं फिर भी कहता हूँ जब आ जाएगा बिल आप उसके फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल, द पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल 2021। मैं यहां से चलाऊंगा, वहां से नहीं। A bill to make provision for the constitution of Pakistan Allied Health Professional Council, Pakistan Allied Health Professional Council bill to stand introduced. Item number Zaruddin Babar Sahab. Thank you. Item number 4. Thank you, Mr. Speaker. I rise to introduce the bill further to amend the Pakistan Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2021. A bill further to amend the Pakistan Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2021 stand introduced. Item number 5. Sheikh Rashid Ahmed. Shaukat Sahab, please. Thank you, Janab Speaker Sahab. I beg to introduce a bill to amend the Mutual Legal Assistance Criminal Matters Act 2020, the Mutual Legal Assistance Criminal Matter Amendment Bill 2021. A bill to amend the Mutual Legal Assistance Criminal Matters Act 2020, the Mutual Legal Assistance Criminal Matters Amendment Bill 2020 stand introduced. Item number 6. Mir Amir Ali Khan Maxi, Standing Committee. Please. The motion. I, Chairman Standing Committee on Maritime Affairs, move the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Port Qasim Authority Act 1973. Not in order. नहीं मानते ऐसे दस्तूर को। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। इस तरह ना करे नबी साहब, इस तरह ना करे कि आप इसको जबरदस्ती रोके। ये तो तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है जी। प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपका तरीका नहीं है कि आप इस तरह उसके साथ इंटरेक्शन करें। आपका कोई टिकट्स आपको मालूम है कि नहीं मालूम? आप मतलब उसका अपनी मर्जी के मालिक है वो जी। कोई और कर ले जी यहां से। कौन है इसमें कमेटी का मेंबर? कौन मेंबर है सर? हाँ किसको? सैफुर रहमान साहब प्लीज। सैफुर रहमान साहब आप ये पर सैफुर रहमान साहब, ये हमने रिपोर्ट पे कर। शकूर शाह साहब प्लीज। शकूर शाह साहब, नहीं आप ज्यादती कर रहे हैं, आप हद कर रहे हैं जी। शकूर शाह साहब। कैप्टन जमील साहब प्लीज। इसके बाद मैं सबको टाइम दूंगा। जो लेजिस्लेशन के ऊपर जो बात करना चाहते वो करूंगा। ये तरीका नहीं है, गलत तरीका है। I intend to move the delay in the presentation of report of the Standing Committee, the bill further to amend the Port Qasim Authority Act 1973, the Port Qasim Authority Amendment Bill 2021 till today be condoned. Now I put the motion to your house. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Port Qasim Authority Act 1973, the Port Qasim Authority Amendment Bill 2020 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those say no. I think ayes have it. Consider the motion is adopted. Item number 7. Japsi Jamil Sahab please. Jamil Sahab please. Captain Jamil. Thank you, Mr. Speaker. I intend to represent the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Port Qasim Authority Act 1973, the Port Qasim Authority Amendment Bill 2021. Thank you. जी किधर है यार? The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Port Qasim Authority Act 1973, the Port Qasim Authority Amendment Bill 2021 stand presented. Item number 8.
Ji, Jamil Saab, please. Thank you, Mr. Speaker. I intend to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan National Shipping Corporation Ordinance 1979, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2021 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee to the bill further to amend the Pakistan National Shipping Corporation Ordinance 1979, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2021 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consecutive motion is adopted. Item number 9, Captain Jamil Saab, please. Thank you, Mr. Speaker. I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan National Shipping Corporation Ordinance 1979, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2021. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan National Shipping Corporation Ordinance 1979, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2021 stand presented. Item number 10, Ji Jamil Saab, please. Thank you, Mr. Speaker. I intend to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Gawadar Port Authority Ordinance 2002, the Gawadar Port Authority Amendment Bill 2021 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Gawadar Port Authority Ordinance 2002, the Gawadar Port Authority Amendment Bill 2021 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consider the motion is adopted. Item number 11, Ji Jamil Saab, please. Thank you, Mr. Speaker. I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Gawadar Port Authority Ordinance 2002, the Gawadar Port एजेंडे के बाद दूंगा सबको टाइम इंशाल्लाह. the Gawadar Port Authority Amendment Bill 2021. जब टाइम आएगा मैं सबको मौका दूंगा जी. जी कौन सा नंबर? The report of Standing Committee on the bill further to amend the Gawadar Port Authority Ordinance 2002, the Gawadar Port Authority Amendment Bill to stand presented. Item number 12, Mujahid Ali Khan. Mujahid Saab. जी प्लीज मैं एजेंडे के मुताबिक करूंगा. एजेंडे के बाद दूंगा मैं. नो प्लीज एजेंडे के बाद दूंगा जी. इस तरह नहीं है कि मैं एजेंडा. जी मुजाहिद साहब कौन है स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर दूसरा? हाँ रुखसाना नवीद मैडम प्लीज. मैं ये करके देते तो ना. मैं इस करके दे देता हूँ. नहीं मैं बीच में थोड़ा करके मैं दे देता हूँ. प्लीज आप मैं देता तो मैं ये करके ना दे देता हूँ. Standing Committee on Parliamentary Affairs, I move the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Election Act 2017, the Elections Amendment Bill 2020. देखिए नंबर वन बात ये कि रूल्स के मुताबिक होगा. नंबर 2 आप मुझे मेरी बात सुन लेना. मेरी बात सुन ले. मैं बहुत एहतराम के साथ आपसे बात करता हूँ. जब बिल पास करना शुरू हो जाएगा तो आपको एक एक बिल पे बोलने दिया जाएगा. एक एक बिल पे आप डिस्कशन करेंगे. ये तो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है मैडम. हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं. आगे इसके बाद आ रहे हैं. जब आ रहे हैं तो इसको मौका देंगे आप सबको. यस क्यों नहीं देंगे जी. प्लीज ठीक है जी प्लीज जी. On behalf item number 13, the report of Standing Committee on the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2020 stand presented. Item number 14, Chaudhry Salik Hussain, please. Chaudhry Salik Hussain. कौन? Sabir Hussain Kamakhani, please. Thank you, Mr. Speaker Sahab. On behalf of the Chairman Standing Committee on Energy Power Division, I love to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill refer further to amend the regulation and generation, transmission and distribution of Electric Power Act 1997, the regulation of generation, transmission and distribution of Electric Power Amendment Bill 2020 till
today be content. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of